Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to MMIR study. Today I am back here again with a new topic, that is climate of India. In this topic we are going to cover the climate and weather and the factors which are influencing on the climate and weather, like latitude, land water relationship, relief, upper air circulation, and the seasons like winter, summer, advancing monsoon, retreating monsoon, and the foremost important thing, that is global warming and the climate change. And apart from this, we may come to note what is AGW and climate change and the impact of climate change on India. So all these topics we are going to cover here, so please watch the video till the end, otherwise you will miss the content. And please don't forget to subscribe my channel. So let us start. First of all, we will clear the concept of weather and climate. We will clear the difference between these two, right? So if we talk about the weather refers to the state of atmospheric conditions over an area at a particular time is called the weather. Now, if we come to know about the climate refers to the average atmospheric conditions for areas over a long period of time. This is called the climate, right? So difference दोनों में सिर्फ इतना ही है कि weather day by day, hour to hour change होते रहेगा, but climate 30 ईयर्स से या फिर 30 से मोर देन ईयर्स के बाद ही चेंज होगा. ऐसा 2 मंथ्स में 3 मंथ्स में ऐसा चेंज नहीं होगा, राइट? नाउ लेट अस नो अबाउट द क्लिमोग्राफ्स. A climograph that depicts the annual cycle of temperature and rainfall for a geographical locations, right? If we know about the technologically क्लाइमेटिकल चेंजेस, राइट? टेक्नोलॉजिकली अगर अपने क्लाइमेटिकल चेंजेस मालूम होने का है तो क्लिमोग्राफ्स अपने क्या करते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर और रेनफॉल कितना हो रहा एट ए पर्टिकुलर प्लेसेस के बारे में अपने को बताते हैं. क्लिमोग्राफ्स भी बोल सकते हैं इसको, या तो क्लाइमेटोग्राफ भी बोल सकते हैं. नाउ लेट अस नो अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑन वेदर एंड क्लाइमेट. So the factors that are influencing on weather and climate, they are latitude, land water relationship, relief, uppermost atmospheric conditions. Okay, so these four are the factors that are influencing on the weather and climate. Now let us discuss them in detail. Now moving towards to the latitude. The latitudes is the intensity of temperature depends on the latitude. Okay, intensity means power. जो भी पावर रहेगा, जितना भी टेम्परेचर रहेगा, वो टोटली लैटिट्यूड्स के ऊपर डिपेंड रहेगा. ओके, द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस नियर द अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन द इंसोलेशन. ओके, और जो भी टेम्परेचर रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, इंसोलेशन के ऊपर डिपेंड रहेगा. और इंसोलेशन किसके बोलेंगे, द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन रेसेस. ओके, then received at that location, this is more intense in the low latitudes and then the higher latitudes. As we move away from the equator towards the pole, the average annual temperature decreases. Okay, so equator से करीब जो भी places रहेंगे वहाँ पर temperature high रहेगा, और temperature जब decrease होगा जब वो poles के तरफ move होगा. Okay, so insolation क्या है, insolation energy received from the sun है. Okay, so और एक इसका एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हैं कि कन्याकुमारी का टेम्परेचर, कन्याकुमारी बीइंग एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द भोपाल और दिल्ली. अगर आप कन्याकुमारी से भोपाल को जब कंपेयर करेंगे, लाइक आप इंडिया मैप भी जब देखेंगे तो यहाँ पर कन्याकुमारी है साउथर्न पार्ट में. सो साउथर्न पार्ट में क्या है, पूरे सीज है, समंदर है. ओके, अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हिमालयास है नॉर्दर्न पार्ट में. सो नॉर्दर्न पार्ट में क्या आएगा, दिल्ली आएगा. सो यहाँ का टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर से बिल्कुल डिफरेंट रहेगा. यही आपको इसके अंदर देखना है कि इन्फ्लुएंस कैसा हो रहा लैटिट्यूड्स में क्लाइमेट की वजह से, राइट? सो इंडिया इज बिटवीन 8 डिग्री एंड 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड द कंट्री इज डिवाइडेड टू equal parts by the Tropic of Cancer and the Tropic of Cancer. Okay, here Tropic of Cancer, here Tropic of Cancer, right? So these two will be affecting on the equators. Now let's move towards to the land water relationship. The water bodies absorb and loses the heat more slowly than land. Due to this, the formation of land and sea breezes influence the climate of coastal regions. Okay, so coastal regions पे इसका इफेक्ट ज़रूरी होगा. और यहाँ पर क्या हो रहा है कि दिन में पानी ठंडा है और ज़मीन गर्म है, और इसका अपोजिट रात में होगा, जिसके रात में पानी गर्म होगा और ज़मीन ठंडी होगी. सो ये जो इफेक्ट है वो रिलेशनशिप बताता है जो कि क्लाइमेट के ऊपर अफेक्टेड है, राइट?
Now let's move towards to the relief. Now coming towards to relief. You have learned that the temperature decreases as altitude increases. Hence, hills and mountains will have lower temperature than locations on the plains. Therefore, relief or altitude of a region influences the climate of the area. The places like Nainital, Shimla, Darjeeling as places that have a cool climate even during the peak summer. And similarly, Kodaikanal and Udagamandalam, Ooty have cooler climate when compared to places near the coast. So places जो coast से बिल्कुल करीब रहेंगे वो compared to other places, hilly places से ज़्यादा cool रहेंगे. और places like शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग ये समर सीजन में भी cool रहेंगे क्योंकि ये places altitude increase हो रहा और temperature decrease हो रहा है. ओके, जैसे जैसे height increase होंगी temperature वैसे वैसे decrease होंगी. So till now we have discussed about the relief, latitude, land-water relationship and uppermost circulation, that the factors influencing on the climate and weather. Now we will move for the seasons. Now moving towards to the upper air circulation. The upper air circulation includes trade winds and jet streams. The trade winds are named so because they blow steadily in the same direction in a constant course, which make it possible for the traders to carry on their trade. तो ट्रेड विंड्स हवाएं जैसे जैसे चलेंगी उससे क्या होगा, ड्रट्स कहाँ पर आएंगे या जहाँ पर बाढ़ जहाँ पर कुछ आएंगी या फिर कुछ भी आगे जो हवाएं चलेंगी तो उसके बारे में फार्मर्स को इससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है ट्रेड विंड से. और जो है जेट स्ट्रीम्स, नाउ द मूवमेंट ऑफ अपर एयर करंट्स आर नोन एज द जेट स्ट्रीम्स. जो हवाएं बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाएंगी जो कि 12,000 मीटर्स के अबव रहेंगी तो उसको क्या बोलेंगे, जेट स्ट्रीम्स बोलेंगे. These are fast flowing air currents in a narrow belt in upper atmosphere. Okay, so इसकी स्पीड जितने हाई कितनी रहेंगी इसकी 12,000 मीटर्स के ऊपर रहेगा ये, राइट, 12,000. सो जेट स्ट्रीम्स प्लस ट्रेड विंड्स ये भी फैक्टर्स के ऊपर अफेक्टेड रहेगा जो कि क्लाइमेट एंड वेदर पे अफेक्टेड रहेगा, राइट. टिल नाउ वी हैव डिस्कस द factors that are influencing on the climate and weather. Now let's move towards to the seasons. Season winter. The temperature in Indian landmass considerably reduces from mid-November and this cold season continues till February. So January is usually the coldest month. Day temperature sometimes drops below 10 degrees Celsius in several parts of the country. Especially the coastal areas enjoy a moderate climate as temperature remains well above 20 degrees Celsius. The lines below indicate places that have the same average temperature for January. These are the lines. Okay, so these lines shows you the average temperature for January. During winter, the weather is generally present with clear sky, low humidity and cool breeze. So winter जब भी रहेगा आपका स्काई जो है वो एकदम क्लियर रहेगा और ह्यूमिडिटी भी लो रहेंगी और यहाँ पर ठंडे ठंडे हवाएं चलेंगे. कब, विंटर सीजन में, राइट. नाउ बिफोर finishing of this winter, I would like to say the season about some information about the seasons, the cropping seasons. Okay, Rabi, Kharif and Zaid. These are the three seasons. Okay, three seasons are there. So first, if we talk about the winter, it is starting from the October to December. And if we talk about the Kharif, it will be starting from September to October. And in between this Rabi and Kharif, Zaid season will be coming. So between the Rabi and Kharif, Zaid, the farmers can grow watermelon, muskmelon, vegetables and so on. So these were the three cropping seasons as we have already learned in our class 9th. So let's move towards to the summer season. If we talk about the summer season, during the hot season, as we move from southern to northern part of the country, the average temperature increases. Starting in April, the temperature rises and slowly the maximum day temperature exceeds 37 degrees Celsius in northern plains of India. By midday or mid-May, the temperature during the day may touch 41 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. In many parts of the country, especially the northwest plains and central India, even the minimum temperature does not go below 20 degrees Celsius. The northern plain experiences day and hot day winds called loo. So, summer में जब भी
टेम्परेचर की बात आएंगी तब वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रहेगा और डे टाइम जब देखेंगे आप तो 41 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। ओके, और नॉर्दर्न प्लेन्स पे जब एक्सपीरियंस करेंगे और ड्राई एंड हॉट विंड्स को वहाँ पर बोलेंगे लू, LOO। Now, bursting monsoon, the pre-monsoon showers towards the end of summer season in Deccan Plateau. तो ब्रस्टिंग मानसून में क्या होगा, अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज होगा। मीन्स क्या है, जब आम पककर उसकी फसल निकल जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, प्री मानसून और ब्रस्टिंग मानसून में बोलेंगे। नाउ ऑनसेट ऑफ मानसून, by the beginning of June the arrival of Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch in India is called on the monsoon set on monsoon और onset of the monsoon। ओके, तो onset monsoon क्या है, ये अराइवल ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच। जब यहाँ पर जून में अरेबियन सी ब्रांच आया था तो बंगाल, बे ऑफ बंगाल ब्रांच इन इंडिया, और वो भी ब्रांच यहाँ पर आया था, तो उसको क्या बोलेंगे, वो टाइम को जून में उसको क्या बोलेंगे, ऑनसेट मानसून बोलेंगे। Now let us know what is the meaning of the monsoon. A seasonal wind blows in the Indian subcontinent bringing rain when blowing from southwest. तो साउथ वेस्ट से जो विंड्स चलेंगे, जो रेन्स आएंगे, ओके, जो रेन्स और विंड्स ब्लो होंगे उसको क्या बोलेंगे, मानसून बोलेंगे। सो हियर सम इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल इंडियन सीजन्स आर हियर। सीजन्स लाइक वसंता, ग्रीष्मा, वर्षा, शरद, हेमंता, शिशिरा। So these are the seasons that are going on traditionally. So according to months, according to India calendar has been given, and as well as according to months on the Western calendar it has been given. So sometimes it will be asking the examiner in your examination. So you have to keep in mind these things also. Now let us understand what is global warming and how it is going to be affect on the Indian climate. An increase of carbon dioxide in atmosphere increases global warming. So whenever the carbon dioxide is increasing, global warming is also increasing. So this is called as the global warming. Some gases like carbon dioxide prevent radiation of heat from the earth. Carbon dioxide in the atmosphere increases due to increased use of diesel and petrol, cutting of forest, etc. If the carbon dioxide proportion in the atmosphere increase, then less heat will be radiated, causing increase in global temperature. So this results in the global warming. So what will be the measures to minimize the influence of global warming? We can avoid the using of fossil fuels, okay, and we can help in afforestation, and we can avoid using the petrols, diesels more than we want, okay. By recycling industrial waste also we can avoid all these things to avoid the global warming. Now let us see what is greenhouse effect. Keeping us warm is one of the most important things that the atmosphere does for us, right? So the gases like carbon dioxide, ozone, methane, etc. present in the atmosphere traps a lot of energy that reaches Earth. It prevents solar energy from totally escaping back into the space. So this process is called the greenhouse effect. So whenever the plants we are going to be grow, then we will be taking one kind of warmness on our earth with the help of the trees. So greenhouse effects help us to keep us warm and to avoid the carbon dioxide and ozone and methane, etc. Now let us have a look on AGW. AGW means anthropogenic global warming. Anthropogenic means caused by human beings. So जो भी एक्टिविटीज़ ह्यूमन बींग्स से होंगे जिसका इफेक्ट क्लाइमेट पर असर होगा, जैसे कि क्लाइमेट चेंजेस होने की वजह से चेंज रेन एंड स्नो पैटर्न्स में चेंजेस होंगे और स्ट्रॉन्ग वार्म्स भी हो सकते हैं, कभी कभी डैमेज कोरल्स जो पानी के नीचे है, ज़मीन में है, तो उसको भी इफेक्ट हो सकता, यानी तो फिर एनिमल्स जो कि आसमान में उड़ रहे हैं या फिर ज़मीन पर रह रहे हो वो लोगों को भी अफेक्टेड हो सकता है, टेम्परेचर भी हाई हो सकता है उसके अंदर, और क्या है ओशंस बहुत ज़्यादा गर्म हो सकते हैं और जिसकी वजह से क्या हो सकता है पानी नहीं पड़ने की वजह से ड्रट्स भी आ सकते हैं। सो स्नो ऑफ मेल्टिंग स्नो पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से प्लांट्स लाइफ पे भी इफेक्ट हो सकता है। सो ये सब जो ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ है जिसको ग्लोबल वार्मिंग गर्म कर रहा है, ओके, ना कि कूल करना मतलब प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना। और AGW का मेन प्रॉब्लम यही है कि ह्यूमन की वजह से जो कॉजेस हो रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो रहा, मतलब धुआं जो स्प्रेड हो रहा, और डीजल पेट्रोल की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा, जिसकी वजह से AGW को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा।
तो अब इसको कम करने के लिए IPCC, जिसका फुल फॉर्म है IPCC मीन्स इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिकल चेंज। सो ये लोग क्या करे, 2013 में वॉर्सो पोलैंड में एक नई सी अचीवमेंट बना, जिसको अचीव करने के लिए मतलब AGW पर कंट्रोल करने के लिए एग्रीमेंट बनाए थे। ओके, सो हर कंट्री ये फॉलो अप करती है और IPCC का मेन मकसद यही है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम से कम करना। सो होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। If you like this video, please share it among your friends and don't forget to subscribe my channel. And if you want more videos from my side, please comment me in comment box on which topic you want the next video, so that I can make the next video according to your choice. Okay, till then, Allah Hafiz.